सुन, सैली रूनी की नई बुक आई है ब्यूटीफुल वर्ल्ड वेयर आर यू। पढ़ी क्या तूने? फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट सैली रूनी's latest novel beautiful world where are you. I just finished reading this book. I mean last chapter probably because I have already finished almost 90% of the book last week. क्या एक दिन में तूने बुक फिनिश कर दी? बिकॉज इंटरनेशनल रिलीज जल्दी हुआ था एंड इंडियन रिलीज इज लिटिल बिट लेट, but basically I have finished this book because I have received ARC copy, and thank you so much for the ARC copy. And after, let's talk first about the book and why this book is different than the previous one, because this book is mostly talk about the late 20s or early 30s rather than the previous two books like Normal People or The Conversation with the People. These two books are majorly focused on the young generation, teen generation I will say, but this book is little bit different. I'm going to give all the spoiler free review about this book, and let's get into the story first. The story is majorly about the two characters, Alice and Eileen. Basically ये दोनों जो friends है, बहुत यूनिवर्सिटी डेज से friends है. Now they are in their late 20s or early 30s. And they are both are struggling with their personal life, you know, personal trauma, personal mental health, and उसके बीच में ये स्टोरी सारी रिवॉल्व होती है. ये स्टोरी बेसिकली पेस्ट है अराउंड 3 to मेजॉरिटी ऑफ द वीक्स और प्रोबेबली 3 to 4 months के बीच में. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एलिस. एलिस इज अ नॉवेलिस्ट. I believe that Alice is kind of reflection of the Sally Rooney. उसने अपने kind of अपने life में जो जो हुआ है वो that she tried to write through the Alice perspective. She is dealing with the mental and mental trauma. She is a novelist, a kind of a big novelist कि जो बहुत ही फेमस है, उसके विकीपीडिया पेजेस है एंड उसके बारे में बहुत सारे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है. But she is struggling with the new idea. She wanted to write something but she is not getting the idea. So she is dealing with the mental health. And then the second character which is Eileen, यानी कि एलिस की फ्रेंड होती है. एंड आई टॉकिंग अबाउट हर कैरेक्टर. शी इज़ इन द डुबलिन, यानी कि डिफरेंट स्टेट में है. एलिस है डिफरेंट स्टेट में एंड शी इज़ वर्किंग विथ लिटरेसी मैगजीन. एंड उसका एक क्रश होता है, यानी कि जो बचपन का क्रश होता है. वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. सो इन दोनों के बीच में एक्चुअली स्टोरी पूरी रिवॉल्व होती है. ये दोनों एक दूसरे को मेल सेंड करते हैं. दे टॉक अबाउट देयर दे डोंट ट्राई टू कॉल इच अदर बट दे सेंड एक दूसरे को मेल सेंड करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मेल्स, जैसे हम क्रश को बड़े बड़े पैराग्राफ सेंड करते हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ. एंड दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दैट. Now where Alice is dealing with the breakdowns and उसके लाइफ के बारे में उसे एक फ्रेंड मिल जाता है, यानी कि फेलिक्स, जो कि उसका काइंड ऑफ टिंडर फ्रेंड बन जाता है. एंड दे ट्राई टू हुक अप. तो फेलिक्स इज बेसिकली वर्किंग इन अ वेयर हाउस आउटसाइड द सिटी एंड वो एलिस से मिलता है. देन उसके बारे में जानने की कोशिश करता है. देन स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीमेशन, सेक्स, दैट काइंड ऑफ स्टफ उसमें हो जाता है. एंड वेयर एलियन जो डुबलिन में लिटरेसी मैगजीन में काम करती है, तो उसका एक बचपन का क्रश होता है, यानी कि द सेम वे वी सी इन द नॉर्मल पीपल. जैसे कि नॉर्मल पीपल में दो कैरेक्टर बचपन से एक दूसरे को जानते थे, द सेम वे हियर हैपन. वहाँ पे इलिया ने उसका वहाँ पे फ्रेंड होता है सिमोन, जो उसका बचपन का दोस्त है. एंड दे ट्राई टू शी ट्राई टू फ्लर्ट विद दैट इवन दो शी फ्रेंड जोन्ड हिम. सो बेसिकली इन दोनों की एक पैरेलल स्टोरी और इन दोनों की एक पैरेलल स्टोरी, ये दोनों की पैरेलल स्टोरी मूव होती है. एंड उस बीच में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स टॉक अबाउट एक दूसरे को व्हाट आर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट एवरीथिंग अबाउट दैट राइट हैंड विंग एंड एवरीथिंग. मुझे लगता है दिस बुक इज़ मोर अबाउट हिस्ट्रोलिक के कैटेगरी में आती है, बिकॉज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राइट विंग क्या होता है, राइटिंग अबाउट द राइटिंग वर्किंग फ्रॉम द लिटरेचर मैगजीन. देन शी इज़ अ नॉवेलिस्ट. शी ऑल्सो ट्राई टू थिंक अबाउट द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. एट द एंड ऑफ द बुक एलियन ट्राई टू, यानी कि वो डिसाइड करती है कि लेट्स ट्राई एंड मीट एलिस. एंड उसके बुक लॉन्च वगैरह होता है, उस टाइम पे उससे मिलने के लिए जाते हैं. एंड दैट्स वेयर द एवरीथिंग हैपन्स एंड दैट्स वेयर द स्टोरी एंड्स. Now let's talk about what I liked about this book. Well, this book is really good. I mean, it's not a normal book, यानी कि जो पहले दो बुक्स थे उस टाइप के बुक्स, जहाँ पे it's more about young teenager life. But obviously this book is also talk a lot about friendship, sex and that everything about that, which I do enjoy. I mean, obviously I do enjoy. If you're the person who love a lot of romantic books, then you are definitely going to enjoy the book. But if you hate that kind of stuff, then you are not going to enjoy the book. So that's the first thing I really liked about this book. Then the conversation between the Alice and Felix for some later time. Then the way they talk about when after the meeting they talk about everything about their life and talking about mental health. That is something that I really enjoyed reading that book. What I hated in this book, well, there are few things I definitely hated in this book.
First thing is when they talk over the email, like they share everything over the email, and when they talk about the political drama and like everything about the politics, that's something where I felt this book is little bit dull. Obviously, at other point of view, this book is really strong, but the political point of view I usually don't enjoy because I don't read a lot about politics, and this is my personal opinion. You guys can enjoy the book, you can have definitely your point of view about your politics, but for me this is the email series. Like almost 60 like 40 to 50% of the book is more about email, like sending each other emails from one person to the another person, I mean between the two friends. That's something I really did not enjoy. But apart from that, this book is really good. I really enjoyed their friendship, I really enjoyed their talking to each other, I really enjoyed their dealing with their mental health. I really enjoyed when Alice when talk about having a birth or having the having a child, where in the where in the teenage she used to think that she don't want any child. So that's everything about this book. So what's my final verdict about this book? Well, if you guys can enjoy the friendship, mental health, romantic, that books, that genre, then you are going to enjoy this book for sure. If you enjoy the Sally Rooney's writing style and the way he describes the character, then you are going to enjoy this book for sure. But if you are a kind of person who hate politics, who don't like talking about politics in the book, then you might find little bit disappointed at few points in the book. But other than that, this book is a definitely great. Might be we will see into the movie, probably we will see this into the movie somehow, or the Netflix series, I have no idea. But to be honest, I really enjoyed reading this. If you are going to read this book, check out the link in the description, you can buy this book. And that's everything about Beautiful World, Where Are You? If you want detailed review of this book, then make sure you join the newsletter where I'm going to share each and everything about this book. If you're looking for the more book reviews, check out this playlist where I shared everything about the book review. And if you're looking for the more non-fiction book review, then check out this video where I shared everything about the non-fiction book reviews.